डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। देन सेक्स डिटरमाइंड किस तरह हो जाते हैं, हाउ इट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बीइंग्स। तो इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 8 जनरल साइंस का टॉपिक है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द सेक्स। सेक्स मीन्स या जेंडर। There are two genders. One is the male and second is the female. So male boy, or we may call this the girl, boy or girl. So हमारा जो टॉपिक है आज, यानी कि सेक्स डिटरमाइनेशन किस तरह, वो विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिटरमाइन करता है सेक्स, वेदर इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो ये फैक्टर है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स इज कॉल्ड द क्रोमोसोम। इज कॉल्ड द, यानी क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स को, वही डिटरमाइन करते हैं सेक्स को। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, एक आपने सेल के बारे में पढ़ा है, दिस द सेल हियर, it contains this is the nucleus. Inside the nucleus, you know about, it contains thread-like structures. These thread-like structures are called chromosomes. So chromosome consists of DNA, and it consists of genes. So the chromosomes are thread-like. Why? They are found in the cells. They are found in the cells. In human beings, there are 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. Out of these 23 pairs, 22 chromosomes are called non-sex chromosomes. Non-sex chromosomes means they are called autosomes. They are called auto. Why? Because they are not involved in determination of sex. यानी कि ये ऐसे chromosomes होते हैं जो sex determination के लिए इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जो 23rd पेयर होता है उनमें, दिस इज कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम। दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। यानी कि मेल में कौन से होते हैं, जो मेल होता है उसमें होते हैं एक्स वाई। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो एग होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स। एक्स क्रोमोसोम, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जो मेल होता है, इट कंटेन्स two types of, it contains two types of sperms, one with X. Some sperms contain X chromosome and some contain Y chromosome. Some contain Y. If we talk about the female contains only egg. Female egg contains only X chromosomes. So what will happen here? If the sperm cell fuse just like this, if the sperm cell, this is the sperm here, if the sperm cell fuses with the egg, if the sperm cell with X chromosome fuses with the egg, you already know the egg जो होता है इसमें X chromosomes होते हैं। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो जाइगोट फार्म होगा इसमें क्या हो जाएगा, जो जाइगोट फार्म होगा उसमें क्या आ जाएगा, X chromosome। Result will be the, result will be here that it becomes XX. It becomes X. If the baby, it will be a, if this become a baby, this XX when becomes baby, it becomes a girl. It becomes here a girl child. Same is the case if the sperm contains Y chromosome and fuses with the egg, which already contains, the zygote will be formed, contains XY chromosome. The result will be the result जो निकलेगा उसमें, when it becomes a baby, so result it will be the boy. So here we see here the determination of sex is determined by the chromosomes. What type of sex chromosomes are responsible to determine the sex of an individual? But here we see the males are responsible. The males are responsible to determine the sex of an individual. Why? Because the males contain two types of chromosome X and Y. So male is the responsible. So वो जो women होते हैं उसमें sex determination में कोई रोल नहीं होता है, मेल ही होता है जो sex determination
जो डिटरमिनेशन ऑफ सेक्स करता है. So this was about the sex determination. I hope you understand this. In the next video we will discuss about another video. Till then, goodbye.